All right. So this next topic is carboxylic acids and esters. Now, carboxylic acids and esters, even though they're the last topic in organic, they're just an isolated small portion. And there's a lot of things that we already know from O levels that we are going to use over here. So, first of all, even though carboxylic acids have the COO in them, they're not thought of as typical carbonyl compounds because their behavior changes drastically the moment you add another oxygen. Because now, with this oxygen, they're going to behave very differently compared to, let's say, the CHO that we had or the other carbon groups, the ketone part that we had. So, this one behaves very different from these two. Okay. So, they kind of like don't act at all like other carbonyl compounds. So that's why even though they have the carbonyl, Assalamu alaikum, even though they have the carbonyl group, we will not consider them to be carbonyl in practice. Okay. So basically, it is this portion of it that determines their reactions. And of course, what is the reaction? This bond breaks. And that is why they're acids. They break this bond, they lose H positive. How? This is basically given to O. The two electrons go to oxygen, and that is how you're able to get this. So this is a polar bond, and when it breaks, the two electrons are given to oxygen, and that is how it breaks. Okay. Now, at the same time, this, even though it's a polar bond, it does not mean it's a very weak bond. They do not ionize very much. So they're still weak acids. So two things. First, they don't act like other carbonyl compounds because of this oxygen. And this is the portion that determines their properties. And this bond breaks not that much, but to a fairly decent extent so that we can call them weak acids. Does that mean that their boiling points will be higher than aldehydes? What do you think? Or alcohols? Yeah, it does mean that because their boiling points are higher than both alcohols and aldehyde. So we can kind of like say that COOH, they're always the first ones. So carboxylic are higher than alcohols. We know alcohols have hydrogen bonding, so that's why they're higher. And then we have aldehydes, which have lower boiling points than that. And why do they have higher boiling points? Again, hydrogen bond. But then the question is कि hydrogen bond तो alcohol में भी थी, तो carboxylic acid में क्यों है? तो उसकी बड़ी simple सी reason है कि देखें, you have two oxygen groups, which means that now this oxygen has its lone pairs that it can use, and this oxygen also has its lone pair that it can use. So two oxygen. So this one is higher because of two oxygen, and this one is one oxygen. Okay. And this one, even though it has two oxygen, this has no H bond. So because of that, aldehydes have the weakest of their, compared to these, they have the lowest boiling points. Now, does this mean that they're soluble in water, carboxylic acids? Hydrogen bonding bana rahe hain, what do you think? Will they be soluble? Come on. Of course they're soluble. Because they're making hydrogen bond. Anything that makes hydrogen bond is soluble in water. So they are soluble in water. Okay. So solubility is true for carboxylic, alcohol, and aldehydes, but with carboxylic acid, the solubility is greatest. With alcohol, it is slightly less, especially if the alcohol has a longer carbon valley chain. So as the carbon chain increases, as the carboxylic acids MR increases, it is likely that its solubility decreases. Question: will a dicarboxylic acid or a dioic acid be more soluble than a single COOH group? अगर दो COOH होंगे तो दो साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, which means it is more soluble. Okay.
All right. So that is Okay. carboxylic acid. Yeah. So sorry, could you repeat that? I'm saying that if I have an acid which is dioic compared to a single COOH part in another molecule, which one is more soluble in water? So it's going to be the one with two carboxylic acid groups because वो दो साइड से hydrogen bond बना सकते हैं water के साथ. All right. Yes, sir. What are the acid reactions like? They do virtually all the acid reactions that we have. So they do react with carbonates. They do react with the sodium metal, with alkalis. They do all of that. For example, I'll take ethanoic acid as an example. So अगर मेरे पास ethanoic acid है, CH3COOH, and I add it to water, then it will dissolve to some extent. It will ionize to some extent and give me this ion, H3O positive, which is hydronium, and this is called ethanoate ion. Okay, so this shows that it has lost H positive. Okay, now because of this, this is acting as an acid. So does it react with alkali? Of course it does. So for example, CH3COOH with sodium hydroxide, for example, it will create water, which basically means that this H and OH, sorry, this H and this OH have reacted and made water. And what is left? On this side, I have this left. And on this side, I have just the sodium ion left. So they'll both react and they will form sodium ethanoate. One thing that I want to tell you about ethanoate ion is कि ethanoate ion का structure ये होता है. ऐसे था ना CH3COOH. So ये H positive चले जाएगा. And when it's gone, यहाँ पे negative charge आएगा. But अब question ये है कि how does this carbon know whether it was this oxygen or this oxygen? उसके लिए तो दोनों एक जैसे oxygen ही है. So turns out it doesn't. Actually, the negative charge gets delocalized along both the oxygen. So वो दोनों के ऊपर delocalize हो जाता है. और इस कार्बन के लिए दोनों ऑक्सीजन एक जैसे ही हैं. And this thing is called a base. It's a conjugate base. And of course, this is being stabilized by the inductive effect of this one. ये एक इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है मीथाइल ग्रुप और उसकी वजह से ये चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है. अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा. ओके, बट इससे ज्यादा एएस में वो बातें नहीं पूछता. ओके, नाउ does this react with metal? Of course it does. For example, CH3COOH with sodium metal, just like other metals जो कि सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, sorry, just like other acids with sodium, it will release hydrogen gas, giving us CH3COO sodium ion, again sodium ethanoate. Okay, will it react with carbonates? So CH3COOH, for example, with sodium carbonate. Yes, it will react. It will give carbon dioxide plus water plus again the same thing. You should always balance the equation. So यहाँ पे I'm getting half of this, and यहाँ पे भी I'll be getting 2 of this. So yeah, it is balanced. Okay. So yes, they do react as acids, and the acid forms ion, which is stabilized by the alkyl group that we have. Okay. So alkyl groups has a positive inductive effect. Okay. All right. Now, how do we get them? How do we make carboxylic acid? तो इसका spider map क्या होगा? So carboxylic acids को बनाने के हमारे पास काफी methods हैं. एक तो बहुत सिंपल सा मेथड हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर प्राइमरी अल्कोहल है, रिमेंबर प्राइमरी अल्कोहल, so you will oxidize it, and if you oxidize it in through reflux, so oxidizing agent in reflux, of course it's a strong oxidizing agent, weak oxidizing agent का काम नहीं है ये, it will form carboxylic acid. But if you don't reflux, then you can oxidize carboxylic acid and you can get aldehydes.
Again, just the primary alcohol. Secondary alcohol will not form aldehyde. And this aldehyde can be converted to carboxylic acid by using any oxidizing agent. So ये बनेगा distillation में, but aldehyde से हम वापस carboxylic acid बना सकते हैं through any weak or strong oxidizing agent, doesn't matter. ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि हम ऑक्सीडाइज करके इससे बना सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड की जब भी आप बात करेंगे, आई वुड सजेस्ट यू रिमेंबर एसिडिफाइड K2Cr2O7. और वीक एसिड की जब भी आप बात करें तो यू कैन यूज टॉलरेंस रिएजेंट, यू कैन यूज फेलिंग सॉल्यूशन. ओके, सो वी हैव ऑक्सीडेशन. इसमें भी हमें रिफ्लक्स करना होगा, उसमें भी हमें रिफ्लक्स करना होगा, एंड वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रिएक्शन. एक और रिएक्शन है जो हमने अभी डिटेल में पहले नहीं पढ़ा हो. सो दिस इज अ न्यू वन फॉर यू. रिमेंबर दैट यू कैन गेट नाइट्राइल्स by nucleophilic substitution of alcohol. ठीक है, सो OH के साथ हम पहले क्लोरीन ऐड करते हैं और फिर क्लोरीन के बाद हम नाइट्राइल लाते हैं. तो वो नाइट्राइल जो है दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड. सो नाइट्राइल को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे. ओके, सो नाइट्राइल में हम वाटर ऐड करेंगे. ओके, सो दिस इज वाटर, but either it is acidified or it is alkaline. ठीक है, और इसको हमने रिफ्लक्स करना होगा. And when you do that, the nitrile will form carboxylic acid. So nitrile में वो जो CN ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन सेपरेट हो जाता है और कार्बन सेपरेट हो जाता है, and you get this. So let me give you an example of this. Let's say मेरे पास था प्रोपेन नाइट्राइल, ले लेते हैं. Yes, somebody had a question. Sir, Yes. what if instead of like how would we know कि हमें H plus लेना है या OH minus दोनों में से कुछ भी हो for सकता है, nitrile? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्शन वाटर का है. प्योर वाटर रिएक्ट नहीं करता, वी नीड इम्प्योर वाटर. तो वो एसिड हो या एल्कली हो, इट विल रिएक्ट. Got it, thank you. Okay, so I'm reacting this with water in presence of, let's say, acid. अब क्या होगा? सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं होता, अभी हम उसको बाद में देखते हैं. लेट्स से हम कहते हैं इसका रिएक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड यू विल गेट दिस कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, it will form carboxylic acid. And ये जो नाइट्रोजन है, it will form ammonia. But ये इस दोनों के केस में होगा, मतलब एसिड हुआ या एल्कली हुआ, ये दोनों होंगे. But let's say मैं यही रिएक्शन कर रहा हूं in acidified situation. तो which of these will accept H positive? ये बैलेंस नहीं है by the way. Okay, क्या अमोनिया H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा या COOH H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा? It will be ammonia, right? So this ammonia will change to ammonium. So it's not like the ammonia will bubble out. You will get ammonium ions dissolved in there. But because this acid is already there, this is a weak acid, ये ionize नहीं होगा to large extent. Now, if we do the same thing, but in alkaline situation, तो फर्क क्या पड़ता है? Of course, this will react with it. And this will create water. So यहाँ से ये H positive चले जाएगा. Ammonia gas will bubble out because it doesn't have any hydrogen ions to accept. And water is made. Of course, यहाँ पे water है, यहाँ पे water है. आप फाइनल इक्वेशन में अगर सिर्फ 1H2O लिख दें और यहाँ पे ना लिखें तो दैट्स फाइन, बिकॉज वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. Clear? So two main important reactions that we should know about. One is that oxidation. Yes, sir. Yes. Could you explain the OH minus one again? ये जो नीचे OH किया आपने.
जो NH3 और ये था H2O जिसमें बन रहा है नीचे अभी लगी है। या श्योर। सो यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो हमने देखा ना कि इट विल क्रिएट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनियम, ठीक है। जी अब सर। वो अमोनिया, अगर एल्कलाइन सिचुएशन में अमोनिया हो तो वो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर एल्कलाइन सिचुएशन में एसिड हो तो वो रिएक्ट करता है। ये बात तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई नई जी बात सर। नहीं है। जी सर। सो बिकॉज यू हैव बोथ ऑफ देम, यू हैव अमोनिया एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन दोनों में से एक ने रिएक्ट करना है। So more कौन सा reactive होगा? would be the acid. नहीं, इन दिस सिचुएशन व्हेन यू हैव हाइड्रोक्साइड आयन अवेलेबल, तो देन एसिड विल रिएक्ट। जी इसी सिचुएशन में NH3 नहीं Yes. करेगा और अच्छा सही। Yes. ठीक है सर। I missed the negative charge here, so negative charge हो गया यहाँ पे। Okay? सर तो वो जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है ये भी आगे कहीं रिएक्ट कर सकते हैं नहीं, ये जो सीड? Of course कर सकता है। सही। Of course कर सकता ये Na के साथ कर सकते हैं ना? है। Which product? The सर ये जो एसिड से अभी क्या ये वाला एसिड, नहीं निचला वाला सर, निचला वाला जिसमें नीचे माइनस वाला? जी Of course, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया होगा तो आपके पास यहाँ पे सोडियम आयंस आ जाएंगे। सर। और सर ये अभी हमारा प्रोडक्ट, ये इसका नेम क्या होगा जो C और C माइनस वाला इसका क्या चीज है? जी सर क्या चीज है? दिस इज प्रोपेनोएट आयन। प्रोपेनोएट। और सर अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने अल्कोहल से स्टार्ट करना हो तो मैं साइनाइड कैसे ऐड करूंगा उसके अंदर? क्या मैं अल्कोहल में नाइट्राइल ऐड कर सकता हूं? सर डायरेक्टली नहीं। हाँ, डायरेक्टली थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट रिएक्ट इट विद सम वे टू सब्स्टिट्यूट। अच्छा, उसके अंदर सबसे आसान तरीका पता है क्या है? यू रिमूव द OH पार्ट एंड यू स्टार्ट ओवर। आप OH को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? यू विल टेक इथानोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल विल गिव यू एल्कीन, और उससे फिर आप उसमें HCN इन प्रेजेंस ऑफ NaCN ऐड करें और नाइट्राइल ऐड करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन करें क्लोरीन की या ब्रोमीन की या आयोडीन की। उसके हमारे पास 6-7 मेथड्स हैं। उसमें हम PCl5 यूज कर सकते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं, SOCl2 यूज कर सकते हैं, HCl यूज कर सकते हैं। इन चारों से तो क्लोरीन आ जाएगा, OH की जगह क्लोरीन आ जाएगा। अगर आपने क्लोरीन नहीं लेके आना, आप रेड फॉस्फोरस के साथ ब्रोमीन या आयोडीन डाल दें तो वो आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं डालने, HBr HI दोनों आ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके OH will be replaced by a halogen. Now that halogen can be substituted with cyanide using the NaCN, HCN in ethanolic situation. So alcohol से direct nitrile लाना मुश्किल है. There are two ways. Either we convert it to alkene and then convert it to nitrile. So either you give to alkene and then you go to nitrile, or you go to halogen alkane, and that's how you get to the nitrile part. This is nucleophilic substitution. This is also nucleophilic substitution. This is elimination, and this is nucleophilic substitution. And they will lead you to nitrile getting carboxylic acid. But remember, the nitrile will add a carbon to it. ठीक है? अच्छा, अब लेट्स सपोज मुझे वापस कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है, तो वापस कैसे बनाऊंगा मैं? रिड्यूस करके। और वो रिडक्शन के लिए मुझे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए? कैन यू टेल मी ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट? LiAlH4, I think. Excellent. Yeah,
लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड या लिथियम टेट्राहाइड्रोलुमिनेट, दोनों इसके नाम है। आप उन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट, सॉरी मतलब in ether use कर सकते हैं and you will get the alcohol back. Again, this will be a primary alcohol and it will not give you the aldehyde. ये एक जरूरी चीज आपने ध्यान में रखनी कि you cannot get the aldehyde directly from carboxylic acid. आपको वापस अल्कोहल बनाना पड़ेगा और वहां से फिर डिस्टिल करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। ओके okay? Sir, reduction is also like always in reflux. Reduction, देखें, why do we use reflux at all? Every time you have something that is volatile and you don't want it to escape, you use reflux. So we are making alcohol, we don't want alcohol to escape, so reflux is useful there. Of course carboxylic acid इतने मतलब volatile नहीं होते हैं, तो carboxylic acid को as such कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, can we convert carboxylic acid to, there's a thing called acyl chloride. Now acyl chloride isn't technically, the detail of acyl chloride is not in our syllabus, but I have seen a few questions जिसमें उसने carboxylic acid को acyl chloride में convert किया है. So I'll just quickly introduce you to that. You don't need to go into a lot of detail of that कि ये क्या हुआ. So remember the way through which we were able to convert an alcohol into halogen alkane? Just like that, we can do the same thing with carboxylic acid and we will get acyl chloride. Carboxylic acid में होता है COOH, acyl chloride में होता है COOCl. Okay, now to do that we have three methods. We can use PCl3, we can use PCl5 and we can use SOCl2. Again, ये थोड़ा सा AS के सिलेबस से बाहर है, but there have been questions in the exam जिसमें उसने आपसे बोला है कि अच्छा ये carboxylic acid acts as an acid and this complete the reaction, suggest what will happen. जब वो सिलेबस से बाहर की बातें करता है ना तो वो suggest बोल देता है, predict बोल देता है, ठीक है? So to reverse it we just need to add water और वो reverse हो जाएगा, ठीक है? So if you add water to it, obviously again pure water नहीं use करते, acidified use करते हैं and you will get carboxylic acid back. ठीक है? So this acyl chloride, is this acidic? Yeah, neutral. It doesn't have H positive to give. ठीक है? So it's not acidic. If something is not acidic does not mean that it is alkaline. Chlorine है ना? So नहीं फर्क पड़ता. So नहीं हो सकता है, मतलब आपका जो आइडिया है ना कि ये बेसिक होगा, तो I can understand that because COCl, COOCl के पास lone pairs हैं, तो it is easy to expect कि वो lone pairs को use करके as a base react करे. But you also have to understand that the bonds are very polar and oxygen is already pulling a lot of electrons in. So it, even if it wants to act like a base, वो बहुत weak करेगा. हाँ, when you dissolve it in water और chloride ion lose हो जाए तो फिर ये conjugate base बनाता है. But again, that detail is not in our syllabus for now at least. अच्छा, अब इससे एक reaction अगला ऐसा है जो कि हमारे लिए जरूरी है for our syllabus, but it's actually a very easy reaction. This is something that we know from O levels actually, and that is esterification. Esterification में क्या होता है कि you use concentrated sulfuric acid. Why? Because you want to remove water. And you do it with an alcohol. ठीक है? हमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो प्राइमरी अल्कोहल के आएंगे. सेकेंडरी अल्कोहल करते हैं बट वो हमें क्वेश्चन उस पर इतना आना ही नहीं है. So what will happen? It will create ester. ठीक है? And that ester is basically RCOOR. So this part, this comes from alcohol and this part comes from
acid. Okay, and that is how you're able to get them. So esters की usage हमें आनी चाहिए कि esters कहाँ पे use होते हैं. So उनके बारे में esters के दो इस्तेमाल हैं. I'll quickly tell you about esters. Esters are, they have a sweet smell. So they're used in perfumes and they are solvents. So as a solvent भी वो use होते हैं. So the दो main uses हैं esters के जो हमें पूछता है वो हमें वैसे वो एक ही पूछता है, so you can give any one of them. Esters are characterized by this bond. इनमें ये होती है, इस साइड पे भी एक alkyl group होता है और इस साइड पे भी alkyl group होता है. Now how do we get them? We simply take an acid. So let's say I have, I'll take the example of ethanoic acid. Okay. And I react it with, let's say, methanol. So what will happen is that the H and OH will be removed. Now we don't need to get into the detail of which one is removed from acid and what is removed from alcohol. I mean, it is possible to remove this H and this OH and still get the same answer. And that is fine. We can get them. But it doesn't matter as far as we are concerned. Of course, if we were talking about particular isotopes और हम इसमें interested होते कि identify करना है हमने कौन सा oxygen जा रहा है, so sure we can do that. Now, what will it do? It will create water, which is a simple byproduct. And whatever is left, for that we have the method RCJ. Remove these, copy what is left. So copy what is left. This on this side and that on the other side. And third, join. Just join them. And we have the ester that we're looking for. Now, how do you name this thing? Remember, the main functional group you have is COO. So COO wali side se main uska naam hoga. So the main chain is this one, which has 2 carbons. So it is ethanoate. And this one is actually just a branch on the oxygen side. So that is methyl. Okay. Methyl ethanoate. Can it have isomers? Of course. Now, to make isomers, here is a very simple technique that I use when you need to make esters of any ester. Oh, sorry, isomers of any ester. So I'm going to take an example of, let's say I have methyl butanoate. And the examiner says, make esters of this. Now, obviously, one option is that I start drawing esters and I go crazy doing that. But there's a very easy way of doing this. I know that I have COO bond and there's alkyl on this side and there's alkyl on this side. Now, the way I will do it, the isomers is that I will just remember how many carbons I have on both sides. Okay. So because this is methyl butanoate, I have 5 carbons in total, 1 for methyl, 4 for butanoate. So right now I have 4 on this side and 1 on this side. Remember, this 4 includes this carbon as well. I can get another isomer with 3 here, 2 here, another isomer, 2 here, 2 here, 3 here, another isomer, 1 here, 4 here. Now, within these isomers, I can get branches. So for example, in this one, I can get a branch which is just straight. And yeah, that's it. I don't think I can get a different branch in here. Because यहाँ पे इस तरह होगा ना, तो ये किसी branch में जा नहीं सकता. But on this side, I can have, again, it doesn't matter which side you're talking about. इस side को आप alcohol वाली side बोल दो, उस side को दूसरी side बोल दो, it's up to you. So right now what I'm thinking of is कि मेरे पास ऐसे है. और जो 4 carbons, जैसे यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, तो ये 4 इस side पे हैं. अब इन 4 की branches हो सकती हैं. One is I can get them in straight chain, no branch. One is I can get them in 3 key chain with 1 branch. And that is fine. So I have 2 isomers here. So 4 key मैं switch करके 2 बना सकता हूँ. So this is going to split up into 2 isomers. Okay? अच्छा.
This one I can't split, this one I can't split, this one I can't split. Now इसको देखते हैं, इसको isomer में split कर सकते हैं. I have 3 carbons on this side of oxygen. So ये ऐसे हो सकता है या ये ऐसे हो सकता है. So I have 2 isomers here. Similarly, when I have 4 carbons, I can make 4 की chain, I can make 3 की chain, और 3 की chain के अंदर भी मैं उसको further substitution कर सकता हूँ. And I don't think I can have 2 की chain. So yeah, these are the isomers that I have. So just by identifying how I have the carbons and what branches I have them, it's easy for me to make the isomers. So as you can see over here, how many isomers of this thing I can make, which are all esters. The 4,1 has 2 such isomers. The 3,2 has 1 such isomer. 2,3 has 2 such isomers. And 1,4 has 3 such isomers. मेरे पास 8 isomers मैंने बना लिए. Now imagine trying to draw all 8 isomers in the MCQ. काफी ज़्यादा time लग जाएगा. But with this technique, you can draw them in a faster or saving time. इससे भी further आप save कर सकते हो अपना time if you're comfortable with skeletal formulas. Like यहाँ पे मुझे पता है कि ये ऐसे मैं बना सकता हूँ इसको. Okay. So this way I am able to easily do it. ठीक है, ये 3 कार्बन्स O के साथ लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 कार्बन O के साथ लगा हुआ है, तो इस तरह से मेरे लिए काम आसान हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास O के साथ 1 2 3 4 लगे, सॉरी 3 4 लगे हुए हैं. यहाँ पे मेरे पास O के साथ 1 2 3 की चेन है और दूसरे पे कार्बन लगा हुआ है, और फिर O के साथ 3 की चेन है और पहले पे कार्बन ब्रांच में लगा हुआ है. ठीक है, और एक और भी बना सकते हैं कि O के साथ ये 1 2 3. ठीक है, तो मेरे पास 3 आइसोमर, तो ये तो 9 आइसोमर हमने क्रिएट कर ली. राइट, सो मेकिंग आइसोमर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एस्टर्स के ऊपर. और यस, एस्टर्स के एसिड कैसे आइसोमर्स होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. दोबारा पूछो क्वेश्चन. सर एस्टर्स के ना, मेरा एमसीक्यू आया था क्वेश्चन में, वी हैड एन एस्टर और उसमें लिखा हुआ था कि व्हिच डू नॉट इंक्लूड आइसोमर्स ऑफ दिस एस्टर. तो उसमें से एक ऑप्शन एसिड की भी थी. एसिड्स कैन बी आइसोमर्स ऑफ तो एस्टर्स, वही से व्हाई मैंने नॉट. पूछा था, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं? देखें, दैट विल बी द फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. राइट नाउ द क्वेश्चन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट वाज कि इसके कितने एस्टर आइसोमर्स हैं. सो इट वाज गिवन कि हमारे पास एस्टर होना ही होना है. हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में जाओ तो वो तो काफी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एस्टर है तो उससे मैं कितने फंक्शनल ग्रुप बना सकता हूँ. वन ऑप्शन इज दिस, वन ऑप्शन इज दिस, वन ऑप्शन इज स्प्लिटिंग इट, बीच में कार्बन डाल के OH. वन ऑप्शन इज स्प्लिटिंग दिस, बीच में कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर हाइड्रोजन. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस. इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसको एस्टर रखा है, ये एसिड बन गया है. ये कार्बोनाइल यानी कि कीटोन या एल्डिहाइड दोनों हो सकता है विद अल्कोहल ग्रुप, और ये कार्बोनाइल यानी कि कीटोन या एल्डिहाइड विद ईथर ग्रुप मैंने बना लिया. सो देयर इज मेनी options for function group isomer in this particular group. All right, sir. Remember that esters will go back to the alcohol. Sorry, they will go back to becoming the carboxylic acid if you add water to it. Okay. So hydrolysis, again, we do acid hydrolysis, and they will go back, they'll break down where they are. Okay. Now, do you think esters will dissolve in water? No, sir. Why not? Sir, वो bonded है हर जगह. I'm sorry? नहीं sir, in fact करेगा क्योंकि O के पास lone pairs है, hydrogen bonding हो सकती है. But hydrogen तो नहीं है ना? Sir, H के साथ नहीं हो सकती. नहीं. It doesn't have H with in a polar bond with oxygen. So ये van der Waals forces create करते हैं. ये Sir, permanent dipoles हैं इनके पास. Yes, ma'am. what do you mean कि like H plus के like we said something about like oxygen के साथ polar bonds वाला. I'm saying that
the reason water makes hydrogen bond is because water has hydrogen in a polar bond with oxygen. Okay. And this one, ester, does not have any hydrogen in a polar bond with oxygen. So ये Okay, water के ठीक है. साथ hydrogen bonding नहीं कर सकता. हाँ, permanent dipoles हैं इसके पास. It can use those to do this bonding. Sure, it can do that. Or the alkyl chain that we have here, that will obviously have its own reactions. So वो definitely react करती है. But it cannot form hydrogen bonding. ठीक है? All right. See you tomorrow. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.